So, I mean, we have Raju today. बहुत in sorry if I'm like this thing, but मैं राजू के साथ एक different note है, हाँ ऐसे start करते हैं. So, सर के साथ मैंने लाइफ का पहला इंटरनेशनल असाइनमेंट किया, विच इज अ फैशन असाइनमेंट. उससे पहले कुछ कुछ प्रोजेक्ट इंटरनेशनल किए थे, बट अदर देन फैशन. बट राजू के साथ पहला इंटरनेशनल असाइनमेंट आई थिंक अगस्त 2018 नहीं 19 में, जुलाई अगस्त 2019 में वी डिड अ फैशन कैंपेन उस टाइम पे. सो इस सेटअप पे राजू को बुलाने का सबसे मेन रीजन ये था बिकॉज ही इज वन ऑफ द मोस्ट हम्बल गाइज, one of the most down to earth guys, sweetest photographer, one of the sweetest photographers to work with, chill, superb understanding of art form. बहुत मजा आता है काम करने के लिए. मतलब राजू, we have seen the way you work flexibly on this set कि यार दे दिया मूड बोर्ड और अंडरस्टैंडिंग है एंड यू ट्विक इट. एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात आपकी मुझे ये अच्छी लगती है कि the way you communicate, you hardly communicate to a stylist or an assistant कि उसको ठीक कर दे. आप खुद जाके खुद ठीक करके आ जाओगे, चाहे मॉडल का कुछ भी है कि सेटअप एक ऑन सॉन्ग. अच्छी बात नहीं है, हाँ जो कि अच्छी बात नहीं है. नहीं, बट आई पर्सनली फील आपका एक रीजन था, उस पर बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन था कि यार मैं किसी को कम्युनिकेट करूंगा और फिर वो कुछ और समझेगा, वो आगे किसी और को कम्युनिकेट करेगा. यू नो, सो द नॉलेज ट्रांसफर इज नॉट 100%. यू विल से समथिंग एंड द अदर पर्सन विल परसीव कुछ और तरीके से, कुछ और करेगा. बट या आई थिंक एक आर्टिस्ट को होना भी चाहिए अपनी चीज को लेके कितना डिटेल. बिकॉज़ द वे आई एम सीइंग थ्रू व्यू फाइंडर, वो जरूर नहीं कि मैं उसको अच्छे से कम्युनिकेट कर पाऊं एंड वो अच्छे से समझ पाए. इट्स बेटर अनलेस एंड अनटिल इट्स वेरी ट्रिकी, अनलेस अनटिल यू नीड लॉट ऑफ मैन पावर. अदरवाइज लग रहा है छोटा मोटा, तो ये तो बड़ी बेसिक सा चीज है. सो बट बेसिक है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज थोड़ा सा फ्रेम का अगर इधर से उधर हो जाए, दैट क्रिएट्स अ फ्रेम, राइट? So in that way, I think it's important. So I just wanted to know, Raju, देखो, because this industry, अगर हम फैशन इंडस्ट्री की बात करें, फैशन फोटोग्राफर्स टेक्निकली एक ये वो जॉनर है जिसमें हिंदुस्तान में बहुत सारे बच्चे आते हैं एंड यू नो दे वांट टू डू फोटोग्राफी. एंड खास तौर पे व्हेन वी लुक एट the NIFT alumni who are pursuing multiple courses, by the end of 4th year उनको होता है कि photography करनी है. Since वो fashion background से, they want to do more of editorial art form, fashion photography. तो I just wanted to know कि आपकी journey कैसे start हुई? How come a guy from Bihar, from a particular town, from a particular mindset, आपने फैमिली को कैसे परस्यूट किया? बिकॉज वो कनेक्ट करता है मेरे साथ भी, बिकॉज आई ग्रो अप इन अ टाउन. परसुएडिंग योर फैमिली यार ऐसा कुछ करना है. सो इसमें ये है कि सो आई बिलोंग फ्रॉम कंप्लीटली इंटीरियर फ्रॉम इन बिहार. छोटा सा जगह हाजीपुर, पटना से ऑलमोस्ट लेट्स से 25-30 किलोमीटर 40 किलोमीटर अवे है. सो वहाँ से है. बट ये मेरे साथ अच्छी बात ये थी कि फ्रॉम स्टार्टिंग ओनली आई गॉट द थिंग इज कि आई डोंट हैव टू, बिकॉज बिहार में पीपल, मोस्ट ऑफ द पीपल दे गो फॉर डॉक्टर, इंजीनियर, दीज आर लाइक नॉर्मल नॉर्म्स. उसके बाद IAS, यही 3 चीज़ें हैं. अगर आपने ये तीनों में से कोई एक फुलफिल नहीं किया, दैट मीन्स कि आपका जीवन सफल नहीं है. बट फ्रॉम स्टार्टिंग ओनली आई हैव गॉट द थिंग इज कि मुझे ये नहीं करनी, बिकॉज मुझे समझ में आ गई थी कि मैं इसमें अच्छा नहीं हूँ. लेट्स आई वाज नॉट वेरी गुड इन मैथ, आई वाज नॉट वेरी गुड इन साइंस, अदर बेसिक. एंड देयर वाज थिंग कि मेरी एजुकेशन काफ़ी अच्छी हुई इन द सेंस कि एक क्लास 6th में एक नवोदय विद्यालय करके एक होती है, वहाँ पे मेरी सिलेक्शन हो गई. उसके बाद आई वेंट इनटू देयर, वहाँ पे मैं गया एंड वो कैंपस ने मेरे लिए अपॉर्चुनिटी का दरवाजा खोल दिया. मतलब द काइंड ऑफ टीचर वी गॉट, आई गॉट द काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट, द थिंग इन टर्म्स ऑफ गेम, आर्ट, पेंटिंग, दिस, मतलब मल्टीपल जो वो होती है. इन दैट वे आई वुड से कि आई वॉज वेरी लकी कि मैं उसमें सिलेक्शन हो गई एंड वहाँ पे गया और इतने अच्छे अच्छे टीचर हो गए. फॉरगेट ये सब सब्जेक्ट, वहाँ पे जो हिंदी के टीचर थे इतने सो गुड. मतलब मैं कभी साइंस और वो में उतना इंटरेस्ट नहीं रखता था, बट द हिंदी के टीचर दे यूज्ड टू टीच मी. ऐसे समझाते थे कि लगता था कि आई एम इन सम अदर वर्ल्ड. मतलब वहाँ से होती नहीं कि एक क्रिएटिविटी, वहाँ से यू स्टार्ट इमेजिनिंग कि अच्छा ये चीज़ हो रही है. सो दैट थिंग आई हैव, दैट हैज़ हेल्प मी. प्लस पेंटिंग, म्यूजिक, वहाँ पे मैंने तबला ये बजाना सीखा. वहाँ पे है मेरी काफ़ी अच्छी इंटरेस्ट हो गई म्यूजिक में. आई माइट नॉट बी गुड बट इन टर्म्स ऑफ प्लेइंग और जो भी, बट आई हैव गॉट द सेंस कि मैं वहाँ का जो स्कूल का जो भी फंक्शन होता था, आई यूज्ड टू प्ले तबला. और ना छोटी छोटी पोइट्री का, तो वो ना
आई एम वेरी गुड इन हिंदी पोइट्री, मतलब मैं लिखता नहीं हूँ बट आई हैव दैट सेंस कि अच्छा कहाँ पे है, थोड़ी बहुत उर्दू उर्दू का भी जो समझ होती नहीं, है। वो कुछ इंस्टाग्राम स्टोरी में जब आप घर पे हाँ जाते हो अपने, तो तो वो मुझे, लगता है। हाँ वो चीज़ मेरे लिए ना मुझे लगता है आई वाज ब्लेस्ड इन दैट, आई यूज्ड टू राइट पोएट्री। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इन होलसम ये, आई वाज नॉट ए वेरी वेरी ब्राइट स्टूडेंट जो 90 95 लाता है, आई वाज गेटिंग 70 75 80 मैक्सिमम 80। बट उसमें था कि जितने भी स्कूल के आपके पेंटिंग कंपटीशन हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, कोई प्रोजेक्ट बन रहा है, तो उसमें पीपल यूज्ड टू कॉल मी, क्योंकि मेरी हैंड अच्छी थी, मेरी मेरी पेंटिंग स्किल अच्छी थी, तो पीपल यूज्ड टू कॉल मी। वहाँ से धीरे 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 डेवलप होते गए, एंड वहाँ से ही आई फिगर इट आउट कि नहीं भाई मुझे, बिकॉज वहाँ पे एक्चुअली आपको पता नहीं चलता करना क्या है, बिकॉज आपके सामने कोई वो नहीं है, कोई कोई आइडियल नहीं है। लेट्स से इफ आई हैव टू बिकम डॉक्टर, मुझे पता है कि मुझे इनके जैसा बनना है, आई हैव टू गो कोटा, आई हैव टू गो समवेयर, बट मुझे पता नहीं करना क्या है, बट आई वॉज वेरी श्योर कि मुझे कुछ क्रिएटिव चीज़ करनी है, क्या करनी नहीं पता। वहाँ से मैं निकला एवरेज रिजल्ट लेकर के, देन आफ्टर दैट कमिंग आउट फ्रॉम देयर, इधर उधर, एंड इवन पेरेंट इवन दे वर नॉट कन्विंस्ड कि करना क्या है, ये नहीं समझ में आ रहा था उनको एक्चुअली, बिकॉज उनके सामने कोई रोल मॉडल नहीं था कि ये लड़का ऐसा बनेगा। बट कहीं ना कहीं था कि मुझे कुछ वो करनी है। प्लस 2 साल इधर उधर भटकते भटकते देन मैंने कुछ कुछ इंजीनियरिंग का भी वो करना शुरू कर दिया, तैयारी करना शुरू कर, पटना में इट्स ह्यूज हब फॉर द इंजीनियरिंग। ये बिहार में खून में मैंने ऑलमोस्ट 3-4 महीने तक मैंने वो किया, एंड सबको मैंने पैसे दे दिए, मतलब जो भी टीचर थे, एंड दे वर गुड ओनली, बट मुझे लग रहा था मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा था, एंड आफ्टर, और मुझे डर भी था कि हाउ विल कन्विंस माय पेरेंट। देन करते करते मैंने समहाउ हिम्मत जुटा करके मैंने बोला कि यार ये तो मेरे से नहीं होगा। देन आई स्पोक टू मैं ये, एंड वहाँ पे एक प्लास्टिक इंजीनियरिंग करके होती है, वहाँ पे आई गॉट सेलेक्टेड। वहाँ पे मुझे 2-3 महीने आई हैव वर्कड इन हाजीपुर में, एक है वो, दैट्स डिसेंट वो, वहाँ पे मैंने आई गॉट सेलेक्टेड इन प्लास्टिक इंजीनियरिंग, एंड 2 साल 2 महीने 3 महीने करने के बाद देन आई गॉट फ्रस्ट्रेटेड, एंड देन आई टोल्ड माई फादर कि मुझे लोहा लक्कड़ वाला चीज़ ना मुझे नहीं करनी है, मैं आई एम ए वेरी आर्टिस्ट फ्रॉम इनसाइड, वो मुझे नहीं समझ में आती है। देन माई फादर टोल्ड मी कि देन व्हाट यू हैव टू डू, आपको क्या करना है वही करो। देन बोला कि फिर ये 40-50,000 रुपये जो आपके एडमिशन में लगी वो क्या, छोड़ दो। तुमने को छोड़ दो मतलब क्या है? तो बोला कि यार इसके चलते मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा पूरा जो है नहीं करो, एक अजीब तरीके से उसको कैरी फॉरवर्ड करो। दैट वाज हिटिंग फॉर मी, मतलब कोई बंदा जिसकी वेरी एवरेज बैकग्राउंड, वहाँ से देयर उनको सामने दिख रहा है कर सकता है, एंड ही दैट वाज द स्पेस, वो मुझे लगा नहीं है आई हैव टू डू, बट करना क्या है। अगेन दैट आई वाज लकी इन द सेंस कि मेरे फादर कभी वो नहीं किया, उन्होंने उन्हें कभी इम्पोज नहीं किया है टू यू हैव टू डू दिस थिंग ओनली, आपको यही करना है। ही वाज वेरी ओपन कि आपको जो समझ में आए करो। तो वो मुझे काफ़ी हेल्प किया धीरे 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 धीरे, एंड मुझे लगता है कि मेरे फादर का भी ना बड़ी आर्टिस्टिक वो थी। जैसे लेट्स से मैं कभी गांव में होता था, जैसे गेहूं की या किसी चीज़ की फसल हो रही है, नॉर्मल जो काम करता मैं भी करता हूँ, अभी भी करता हूँ, तो जाकर के वो द वे ही यूज्ड टू एक्सप्लेन ना, राजू कैन यू सी इसके गेहूं की बाली से जो लाइट छन छन के आ रही कितने सुंदर लग रहा है, अच्छा ये देखो इसकी स्मेल कैसी है। मतलब वो उस समय में भी उतनी नहीं समझ में आ रहा था, बट नाउ आई सी कि वो उनके पास वो दैट वाज दैट थिंग, एंड हिज हैंड राइटिंग, उनकी हिंदी स्पीकिंग सो गुड लाइक यार। तो आई थिंक समथिंग दैट हैज़ गॉट ट्रांसफर्ड इनटू मी। सो वो हुई है, एंड धीरे 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 फिर मैं पटना गया, पटना में फिर भटकते इधर उधर क्या करूँ नहीं करूँ करते करते देन एक कहीं से मुझे दिखा, स्कूल में मुझे पता चल गया था कि निफ चीज़ होती है। हाँ बट उससे पहले मुझे क्या था, व्हाट यू हैव टू डू, देन कहीं ना कहीं मुझे स्कूल में लगा कि आई वांट टू डू कॉपी राइटर। वाई, बिकॉज आई वाज वेरी गुड इन पेंटिंग एंड आई वाज वेरी गुड इन हिंदी लिटरेचर, तो मुझे लगा कॉपी राइटिंग। फिर उसका भी एक स्टोरी है, जब मैं स्कूल में था देन आई यूज्ड टू लिसन दी मैच, नॉट सीइंग द मैच, लिसन द मैच इन रेडियो। और रेडियो में क्या होता है, उस बीच बीच में 99 के वर्ल्ड कप में आई क्लियरली रिमेंबर एक ऐड आता था, ठंडा मतलब कोका कोला, प्रसून जोशी हैज राइट, एंड उस समय न्यूज़पेपर में आता था बहुत अच्छे से, और आई यूज्ड टू मतलब कि ये तो बड़ी अच्छी है। प्लस उसके इंटरव्यू आते थे, विविध भारती करके आता था, उसमें सबका इंटरव्यू आता था, एंड मैं बड़ी गौर से सुनता था। सो उसमें इंटरव्यू में आया था कि ये उसकी जो बैकग्राउंड स्टोरी थी कि सर्वथा है जीत में, सर्वथा है जश्न में, पियो सर उठा के, जियो सर उठा के। बोले कि ये तो बड़ी अच्छी चीज़, मुझे ऐसा ही कुछ करना है, बट कैसे करना नहीं पता है। बट वही करते करते कर देन आई थॉट किया, देन आई हैव टू गो फॉर द मास कम्युनिकेशन। देन मास कम्युनिकेशन के मेरे पास नंबर नहीं अच्छे थे, देन हाउ आई विल डू। देन करते करते भटकते हुए देन किसी ने मुझे बताया कि निफ्ट करके उसमें होती है कम्युनिकेशन ये का। आई वाज वेरी क्लियर कि आई डोंट हैव टू गो फॉर द गारमेंट वाला थिंग, बिकॉज गारमेंट की मुझे इंटरेस्ट भी नहीं थी, ना समझ थी, ना अभी भी है। तो उसमें करते करते देन आई हैव वेंट, लकली फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ,
देन मैंने छोड़ दिया. देन आई हैव स्टार्टेड यूपीएससी की तैयारी में लग गया, फिर जो नॉर्मल वो करते हैं. Great. करते 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 देन नेक्स्ट ईयर ऑल्सो मैंने ये लिखा, मैंने उसका एग्जाम लिखा है. फर्स्ट अटेम्प्ट, फर्स्ट वो हो गई, बिकॉज 2 फेज में होते. फर्स्ट फेज हो गया. सेकेंड फेज में आई वॉज नॉट गोइंग देयर, बट मेरा छोटा भाई है, उन्होंने बोला कि भैया आपने कर तो लिया, फर्स्ट आ गया, क्यों ना आप जाओ, आप जस्ट गो एंड जस्ट सी जो भी होता है. चूँकि फर्स्ट टाइम की मेरी तैयारी अच्छी थी, देन आई वेंट देयर एंड रोट एंड दैट हैज आई हैव गॉट वेरी गुड रिजल्ट, वेरी गुड रैंकिंग. देन आई वेंट टू लेट्स निफ्ट बैंगलोर. आई चूज एंड आई चोज पर्टिकुलर दिस ये ओनली डिपार्टमेंट ओनली. एंड उससे मैं कुछ भी ले सकता था, बट आई वॉज वेरी क्लियर कि मुझे यही करनी है, मुझे यही इसमें जाना है. देन आई वेंट टू कॉलेज. फिर उसके बाद वहाँ पे अपनी एक शुरू हुई. एंड देर इज़ वन सब्जेक्ट, फोटोग्राफी सब्जेक्ट, बट आई वॉज नॉट वेरी श्योर कि मुझे फोटोग्राफी फैशन ही करनी है. मुझे अभी भी दिल से पूछो तो आई ऑलवेज एंजॉय डॉक्यूमेंट्री, जर्नलिस्टिक फोटो, बिकॉज आई फील कि दैट इज द रियल फोटोग्राफी. वहाँ पे कोई आपको रोक टोक नहीं करने वाला है, एंड यू आर द ओनली पर्सन हु आर क्रिएटिंग एवरीथिंग. यू आर क्लिकिंग, यू आर गिविंग ब्रीफ टू योर सेल्फ, एंड यू हैव टू बी वेरी प्रॉम्प्ट. यहाँ तो वेयर आई एम वर्किंग, वेयर fortunately unfortunately it's good कि I have support of lot of people, but that's so sad thing कि lot of people का वो that you have to understand. Right. So वहाँ से हुआ. फिर उसके बाद then my teacher told, and I was very lucky. I always say कि I was very lucky in the sense in every phase of my life I keep getting good people. They have supported. Guru मिले हैं different Yeah, phases. even in school time also, even in college time also, one or two faculty they were very close. I was not very bright student, but very let's say very hard working, very चुपचाप अपना काम में लगे रहना. So उसमें they have supported me. Raju, since you have interest in this thing, why you are trying? Then I did my internship in Bangalore में. There's Yoke Studio. After that I did my graduation project in Tarun करके, very good photographer, amazing. I learned a lot from him. And वहाँ से भी अच्छे मुझे वो मिले, इनपुट मिले, सपोर्ट मिले. एंड ऑब्वियसली देन आई थॉट कि हाँ फैशन इज गुड, नॉट बिकॉज कि सो कॉल्ड ग्लैमर इज देयर, बट आई फाउंड दैट थिंग कि यहाँ पे यू कैन मर्ज लॉट ऑफ डायरेक्शंस हियर, यू कैन मर्ज लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्री स्टाइल also, जर्नलिस्टिक स्टाइल also, फाइन आर्ट also, फैशन का यू कैन जो भी है. सो यहाँ पे आपकी कोई लिमिटेशंस नहीं है. यहाँ यू कैन मिक्स लॉट ऑफ different art forms. art form. Then I started enjoying. You can create beautiful set में भी also you need that kind of artistic. Yeah. Then वहाँ से I got the. There is one thing interesting about you as despite being a photographer, you also आप अपने कैनवस खुद क्रिएट करते हो. You love to paint your canvases. तो मेरी पेंटिंग अच्छे तो थे काफ़ी स्टार्टिंग में. आई यूज्ड टू पेंट, अब मैं थोड़ा सा लेजी हो गया हूँ, बट आई यूज्ड टू पेंट. नाउ आई कैन गाइड देम. तो वो कहाँ पे ग्रेडेशन रखनी है, कहाँ पे डार्क रखनी है, कहाँ पे पैच रखनी है, कहाँ पे. सो बेसिकली इन कॉलेज में ऐसा है लॉट ऑफ पेंटिंग का वो होती है. सो वो दैट थिंग आई गॉट एंड दैट हैज हेल्प मी. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि इफ आई सी माई जर्नी कि जहाँ से, एंड आई एम वेरी प्राउड कि फ्रॉम वेयर आई एम बिलोंगिंग, बिकॉज वहाँ पे दैट आई फील कि वहाँ पे जो नुआंसेस होते हैं, जो डेलिकेसी होती है, जो काइंड ऑफ फील वाली जो बात होती है, दैट आई कैन फील वेरी क्विकली rather देन आई डोंट नो. मतलब शहर में थोड़ा सा आई थिंक कम होता होगा, बट वो चीज़ ना द फील वाली बात है, दैट आई गेट इट वेरी क्विकली. ये चीज़ जाननी थी राजू मुझे कि यू come from a very the setup is rural. Yeah. और सबसे important challenge because almost you are from the same age group. It's very difficult to persuade parents. अगर parents को persuade भी कर दिया, सबसे बड़ा challenge हम जैसे लोगों के लिए ये होता था कि जहाँ से हम आते हैं, और उस दौर की बात है, 12-15 साल पुरानी बात है, family को आपने persuade कर दिया, but family is also answerable to relatives and neighborhood, the neighbor people. So वो कैसे था, मतलब बिकॉज इट्स वेरी ट्रिकी. मैं आपको कि 10 में मैंने इंजीनियरिंग शुरू की, और ऑनेस्टली बोलूं तो मुझे निफ्ट का तो कॉलेज के फिनाले में पता चला कि निफ्ट और फैशन ऐसा होता है, बिकॉज वी वर नॉट अवेयर. आई वेंट टू इंजीनियरिंग struggling as well, because everybody would ask them कि भाई बेटा क्या करता है, कहाँ है, क्या है, and they would say हमें नहीं पता, which is the reality कि नहीं पता था मेरी फैमिली को कि मैं क्या कर रहा हूँ. I was working on something, right, but I was on the right direction. I had कि कर. I just wanted to know from your side कि how was it like? So in that way I would say कि I was very lucky, because मेरे father, especially मेरे father, he was very open and belonging to that space. He is, I feel कि he is very मतलब वो काफ़ी दूरदर्शी जिसको बोलते हैं, वो काफ़ी दूरदर्शी है. उनको पता है कि ये चीज़ इसमें अच्छा है,
करने दो, एंड ही वाज वेरी सपोर्टिव इन दैट वे. लेट्स से कि जब मैं कॉलेज, फैशन कॉलेज वो गया था, देन ऑब्वियसली कुछ नहीं पता था कि कैसा क्या होता है, अभी भी नहीं पता है. सो बस उनको ये था कि मेरे में काफ़ी ट्रस्ट था कि चलो इसको इसमें ठीक लग रहा है, ही हैज चोज, तो ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. नहीं, ही हैज सपोर्टेड मी इवन दो वो सेमेस्टर की फीस निकाला, ये करना नॉट ईजी, बट समहाउ आई हैव मैनेज्ड एंड आई यूज टू गेट दी ये स्कॉलरशिप है, सो वो भी हेल्प हुआ. सो 50% उसका अपना फील है वो था. एंड और वहाँ पे ना एक्सपेंसेस ये ज़्यादा होते हैं इन टर्म्स यू हैव टू मेक ए 3D सारे मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट के आपको 3D बनाने पड़ते हैं, वो मॉडल्स बनाते हैं. सो जहाँ पे आई यूज टू सी कि भाई पीपल यूज टू स्पेंड 10,000 रुपीज, आई यूज टू चूज दैट पर्टिकुलर टॉपिक जहाँ मुझे 100 रुपए में हो जाए, मुझे क्रिएटिविटी दिखाने ना. सो वहाँ इस तरीके से छोटे छोटे ना वहाँ पे आई यूज टू मैनेज एंड आई एंजॉयड दैट फेज. प्लस मेरे फादर का वो इवन तो कॉलेज से निकलने के बाद भी उनको नहीं पता था क्या है क्या है. देन आई केम टू दिल्ली, देन आई हैव स्टार्टेड असिस्टिंग. आई वाज वेरी लकी कि आई गॉट द चांस टू वर्क विद वन ऑफ द लेजेंडरी फोटोग्राफर एंड आई ओट टू हिम. सो उनका वो नहीं था कि क्या करेगा, बट ही वाज वेरी श्योर कि उनको इतना पता था बनेगा नहीं बनेगा, बट बिगड़ेगा नहीं, बिगड़ेगा नहीं. सो दैट मच कॉन्फिडेंस ही हैड. तो वो बस ठीक है करते रहो, बट बैक ऑफ द माइंड उनके दिमाग में रहता था कि यार क्या करेगा नहीं करेगा, कैसे, हाउ ही विल डू. बट उसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था. बट ही वाज लकी, ही वाज सपोर्टिव इन वेरी सपोर्टिव इन दैट वे. ही हैज नेवर फोर्स्ड मी तुम्हें यही करना है, ये नहीं करना है. यस ऑफ कोर्स उस फेज में ही वाज नॉट श्योर कि क्या करेगा कैसे करेगा, बट समहाउ ही वाज सपोर्टिंग मी. दैट्स ग्रेट. सो जैसे अगर अभी बात करें, सो I see your work. Yeah. I remember like the recent work of yours for Yeah. the Vogue, Yeah. the silhouette of shadows Yeah. with the Yeah. model, and I loved that shot. Yeah. I remember like I sent it to Taran or somebody. Like, Mhm. I love this Yeah. shot. Yeah. What Raju shot recently, amazing shot. I see your editorials, Yeah. and I can see कि Raju को पूरा freedom मिला है, Yeah. and he's doing his magic. But when it comes to these kind of forms which I mean, you as an artist are developing and all that, do you also seek inspiration from people of the same sort internationally, globally? कि जैसे किसी फोटोग्राफर का काम स्टडी किया या पसंद आ रहा है, एडोर कर एडमायर कर रहे हो? What I would say, ये ना that gets changes with every phases of your life. Once you are starting out, then every people you like, अच्छा ये है. उसके बाद थोड़ा सा आप आगे बढ़ते हो, देन बोले नहीं ये मुझे अच्छा लग रहा है, नहीं उसके बाद देन यू विल फिगर आउट कि नहीं ये आउटडेटेड हो गया, ये अच्छा लग रहा है. नॉट आउटडेटेड इन द सेंस कि आप वो चेंजेस होते रहते हैं, सिंक कहाँ बेटर हो, वो चेंजेस होते रहते हैं. सो ऑब्वियसली अगर आप देखोगे, फॉर मी मुझे व्हाट आई फील कि people see fashion photography in very ये way, what it call very precise way. I would say that photography is a huge wo. It's a bigger space. Why you have to see in this way? इसको narrow down क्यों करनी है? If you say all the photographers, जो भी legendary photographer हुए हैं, firstly they are a documentary photographer. आप photographer first हो, you are photographer first, then you are a fashion photographer, so called. Genre, exactly. Yeah. So for me, photography is a, rather than if you are a landscape photographer, documentary photographer, journalism, you are doing fine art photo, whatever you are doing, I feel कि आप जो भी लेट्स से पीटर लिंडबर्ग मान लो आप, या फिर जो भी legendary photographer है, firstly they are a documentary photographer, people photographer, then they translated their thing into the fashion. Same, I like Annie Leibovitz's work. Yeah, because she started as a documentary photographer. She covered, I think, war or something. After that, she covered the music, Rolling Stone में she has worked. So in that way, she has, and you can see that progression. You can see that how it has came out here. You can't take as a fashion. I have to do fashion only. Once I will get model only, then I will show. No. If you get the stone also, you have to show it very with pure love and passion. Then only that will come out. That compassion has to be there to do justice. Plus, what you asked कि किससे आप इंस्पायर होते हैं, तो वही पता है कि एवरी फेज ऑफ लाइफ इट गेट्स चेंजेस. नाउ इफ अभी मेरे पास क्या है कि नाउ more than fashion photographer, I get inspired from lot of documentary photographer, and even though I know few of the person, they do just from the phone only, and they are producing amazing picture. मतलब यार shit ये कैसे हो रहा है? So वो चीज that inspired me a lot. I was shocked अभी recently
एक लड़का मेरे पास, बिकॉज वी हैव दिस स्टूडियो, Yeah, तो yeah, ई-कॉमर्स शूट करता था yeah, वो लड़का, और आई हैड सीन हिज वर्क एंड ऑल yeah, दैट, तो अच्छा आता था, अच्छा एक yeah, बार yeah, मिला एंड yeah. ऑल दैट, तो मैं भी कुछ दिनों पहले बैठा हुआ था अपने इन हाउस टीम के साथ, तो बोले सर आपको वो लड़का याद है? मैंने बोला हाँ। बोला सर उसको ना लंदन में बुलाया है किसी यूनिवर्सिटी में, तो मैंने बोला कि दिखाओ भाई, एंड लिटरली उसने उसके फेसबुक के पोस्ट दिखाए, 10-12 पिक्चर दिखाए, और उसके जो वर्क्स हैं Yeah, उसके yeah, वहां लगे हुए थे। मैंने कहा भाई तो तुम इसको ये वाला क्यों काम करा रहे थे? बोला yeah. कि सर उसके पास पैसे नहीं थे, ही वाज Correct. स्ट्रगलिंग अ लॉट, Yeah, yeah, बट उसने जो फोन से इमेजरी क्रिएट की है, इट्स अमेजिंग। yeah, कोई कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं है उस yeah. फॉर्मेट में। सो वो चीज मेरे को ये जाननी थी कि मतलब एज अ फैशन फोटोग्राफर, हिंदुस्तान, वी आर अ 1.4 1.45 Yeah, बिलियन पॉपुलेशन राइट नाउ, एंड वी नो दैट कि हिंदुस्तान में भर भर के टैलेंट है। yeah, yeah. तो do you think, because you have done really great job in such a short span of time, do you think कि we need to have that formal education कि हमारे as a photographer, और what do you think, let's say अगर 20 या 22 साल का लड़का इस टाइम पे और उसको लगता है कि he can create that visual imagery, what would you suggest कि अगर Okay. आप उसकी जगह पे होते इतने एक्सपीरियंस के साथ तो क्या करते? So what I would suggest, even though I keep getting lot of mail also, a lot of request also, lot of DM also, what I would request कि first of all, if you want to do photographer, because photography is not just a photography. Yes, of course, this photography is a medium, way of expression, you can say कि where you are translating your thought process into the picture. But more than that, I would say कि पीछे का जितना इट फ्रॉम वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम, इफ आई वुड से माई जर्नी फ्रॉम वेयर आई कमिंग फ्रॉम, जहाँ जहाँ जैसे जैसे जो जर्नी हुई है, तो छोटे छोटे जो नुआंसेस आपके लाइफ के, छोटे छोटे चीज़ें जो हैं आपके एक्सपीरियंसेस है लाइफ के, कैसे एक्सपीरियंस आपने उसको कैसे डील किया, फ्रॉम वेयर यू हैव, आपने उस चीज़ को कैसे डील किया है, तो सारे एक्सपीरियंसेस मिलाकर दैट विल क्रिएट यू, एंड फाइनली यू विल क्रिएट ए पिक्चर. सो पिक्चर इज नॉट ए जस्ट आप यू हैव जस्ट क्लिक्ड, इट्स नॉट जस्ट अबाउट कैमरा, इट्स अबाउट क्या कोई चीज़ देख करके आपके दिमाग में कैसा है, एंड हाउ यू हैव परसीव्ड एंड देन यू हैव ट्रांसलेटेड. तो सेम वे व्हाट आई वुड से कि फोटोग्राफी की जस्ट वी डोंट हैव टू टेक एज ए जस्ट फोटोग्राफी, जस्ट ए कैमरा, जस्ट ये आई वुड से कि लर्न लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ जितने भी आपके हो सकते हैं, आर्ट फॉर्म हो सकते हैं, मे बी म्यूजिक, ये भी, जस्ट कीप योर आई ओपन, जस्ट कीप योर आईज ओपन, कीप योर सेंसेस ओपन, यू विल लर्न लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम योर आप जिसको आप डेली बेसिस पे मिल रहे हैं, उससे यू लर्न लॉट ऑफ थिंग. जैसे लेट्स से इफ आई गो टू माय होम टाउन, आई नोबडी नोज मी देयर, आई कीप रोमिंग देयर, आई गो टू द लोकल मार्केट, वहाँ से आई कीप ऑब्जर्विंग छोटे 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 चीज़, वो उसको भी नहीं पता होगा, बट आई जस्ट ऑब्जर्व एंड अच्छा ये है इन टर्म्स ऑफ कलर, लेट्स से इन टर्म्स बहुत सारी चीज़ें हैं. आई गो टू माई फार्म, वहाँ पे आई कैन सी द काइंड ऑफ लेट्स से कि कब ओस होती है, वहाँ की जो स्मेल होती है, दैट आई कांट एक्सप्लेन बट जस्ट यू कैन फील. तो वो जो सेंसिटिविटी होती है, दैट यू कांट एक्सप्लेन, जस्ट यू हैव टू ऑब्जर्व, जस्ट यू हैव टू लर्न, एंड वंस एवरीथिंग इज देयर, जितने भी हो सकते हैं, दैट्स इट्स नेवर एंडिंग थिंग. वो करने के बाद ऑब्वियसली it get translated into picture. रही बात एजुकेशन के कि yes, first of all if you want to be a photographer, leave the fashion photographer. So basically what I would say, थोड़ा सा इसका आंसर मैं अलग वे में करना चाह रहा हूँ कि we are in very commercial photography, we are not a fine art photographer, we are not a art photographer, that we have to see कि भाई fashion photographer, yes, आप उस चीज़ को कैसे देखते हो. I see as a commercial photographer, as a yeah, I'm not very artist where I'm taking 6 months and then we are creating something people do, but we are not doing, we work on the brief, so we are a very commercial artist. So in that way I would say कि जितने भी आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं, जितने भी आपके फ्रॉम वेयर यू आर गेटिंग लर्निंग, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके लिए आई वुड से कि एक एजुकेशन हो जाए. फर्स्ट ऑफ ऑल वो असेसमेंट बहुत ज़रूरी है. लेट्स से किसी भी जो भी न्यू पीपल आर सो मच टैलेंटेड, आपको ये समझना पड़ेगा कि ये सेल्फ असेसमेंट जिसको बोलते हैं. लेट्स से इफ आई हैव टू बी सिंगर, फर्स्टली मुझे ये समझना पड़ेगा कि मेरी आवाज़ अच्छी है कि नहीं है, थोड़ी बहुत समझ है कि नहीं है. अगर वो अच्छी है, देन इफ आई विल टेक द फॉर्मल एजुकेशन, दैट विल हेल्प मी. लेट्स से आई डोंट हैव एनीथिंग, एनी बेस, एनीथिंग, एंड आई विल टेक द एजुकेशन, नथिंग विल हेल्प, राइट. आई नो लॉट ऑफ पीपल, दे हैव लर्न फ्रॉम फैशन कॉलेज, मतलब बड़े बड़े फैशन कॉलेज, बट उनके काम में वो गहराई नहीं है. कुछ लोग आई नो whom I highly regard, they don't have that formal education so called, but they have the depth because they have learned, They have that self-taught and they have learned. So yes, formal education हो तो help करता है, obviously help करता है, but more than that I would say कि सबसे पहले they should know the assessment, whether that thing it's in you
और नॉट, एंड वो इजी नहीं है वो समझना कि मेरे में ये चीज़ है या नहीं। मैं समझ गया था कि हाँ थोड़ी इंक्लिनेशन है मेरे में एंड वी कैन एक्सप्लोर। तो वो मैं आई वॉज वेरी क्लियर, वेरी लकी कि मुझे समझ में आ गया था कि आई मुझे इसमें इंटरेस्ट है एंड आई सी थिंग वेरी क्विकली, और मुझे वो उसकी जो समझ होती है आई हैव। बट ओवर पीरियड टाइम मैंने सीखा किया असिस्ट किया, तो वो कर कुरा करके एंड देन आई थिंक इट्स इजी फॉर मी टू डिलीवर, मतलब इट हेल्प्स मी इन दैट वे। या You've worked with so many brands. Yeah, Fashion space, yeah. you work with the best Yeah. of the best brands. Like everybody knows in the market. Everybody who follows Yeah, yeah. like that. One brand, one client, one project which you remember कि यार ये करके तो बहुत मजा आया. Commercial aspect में. आर्ट में तो आप हमेशा एंजॉय करते हो, वो मुझे पता है. कमर्शियल असाइनमेंट कोई ऐसा किया और मजा आ गया, यार ये बहुत अमेजिंग था, एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा था. फिलहाल अभी तो ध्यान नहीं आ रहा, बिकॉज यू हार्डली गेट दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस। यू गेट द एक्सपीरियंसेस इन द पर्सनल ओनली वंस यू आर डूइंग सम एडिटोरियल, बिकॉज अगर मैं हो सकता है कमर्शियल फोटोग्राफी देखता तो मैं आता भी नहीं, बिकॉज आई हैव सीन द एडिटोरियल पिक्चर, आई यूज्ड टू सी द पिक्चर इन मैगजीन, अरे वाह ये कैसा लग रहा है, सो वो देख देख करके आई गॉट इंस्पायर्ड एंड देन आई केम। अगर मैं पहले ही देख लेता कि ये तो कमर्शियल इसमें ये है, तो दिस पॉसिबिलिटी कि मैं वहीं से रास्ता चेंज कर लेता, बट नेवरदलेस बट है कुछ लोग हैं, मुझे अभी एग्जैक्टली नहीं नाम याद आ रहा है, बट वेरी रेयर, वेरी फ्यू पीपल, वेरी फ्यू इट्स देयर जहाँ पे यू मतलब यू फील कि अच्छा यू हैव क्रिएटेड समथिंग, ये वहाँ पे द सर्टेन ब्रीफ आर देयर, यू आर जस्ट फुलफिलिंग देयर रिक्वायरमेंट बेस्ड ऑफ योर एबिलिटी, बेस्ड ऑफ योर टेक्निकल स्किल। But if you say for the personal thing जो काफ़ी है, that Right. even though what I do in, let's say if I'm doing commercial shoot also, then I see कि अच्छा इस project में you can approach in certain way, then what I try कि उसी space में I would say मैं एक दो पिक्चर ऐसे बनाने की कोशिश करता हूँ जिसमें कि मैं हूँ, Yeah. मतलब आई कैन पुट इट इन माई बुक में भी, Yeah. सो हो या नहीं हो बट आई ट्राई। जो the way I see it है, जैसे मोस्टली सीनियर्स के साथ तो नहीं बोल सकते, आप लोगों के साथ नहीं बोल सकते, बट बहुत सारे असाइनमेंट, छोटे असाइनमेंट होते हैं, तो मैं हमेशा फोटोग्राफर को एक ही ब्रीफ देता हूँ कि भाई ठीक है जो भी लोग मांग रहे हैं, एजेंसी क्लाइंट मांग रही है, बट 3 फोटो अपने लिए निकालना, मैं बता के ग्रिड पे 3 ही फोटो, ग्रिड वो तो अभी के बात, बट लेट्स से इफ आई हैव स्टार्टेड शूटिंग छोटे लुकबुक कैटलॉग भी जो भी है, उसमें मतलब यार लुकबुक में क्या ही करोगे वंस व्हेन यू आर कमिंग फ्रॉम दैट मच एक्सपीरियंस, बट व्हाट आई यूज्ड टू ट्रीट दैट लुकबुक एज अ कि यार दिस इज so shoot for me, उसमें I used to see कि that garment that will work, that mood is very good, क्यों ना थोड़ा सा you just get 5-10 minutes and just make the picture for yourself, and that is ये उसकी भी वो requirement fulfill हो गई, and that picture will stay for you, so in that way slowly वो practice अभी भी बनी हुई है, so I make sure कि even though I am shooting hardcore commercial shoot, in that in between also I used to make कि there is some picture which is you enjoy. Yeah. डू यू थिंक कि जो हार्डकोर जो अभी नई जनरेशन आ रही है, डिजिटल ओरिएंटेड, हार्डकोर डिजिटल ओरिएंटेड, आपको लग रहा है कि मतलब डू यू थिंक कि वो उस प्रिजर्वेरेंस के साथ काम करेंगे आगे, उतनी डिटेल के साथ करेंगे जैसे आपको, मतलब आई नो पर्सनली नो कि यू लव टू शूट ऑन फिल्म्स एज वेल, दैट डेवलपिंग दैट फिल्म, दैट स्मेल ऑफ द केमिकल, it's a different feeling altogether. You cannot explain, it's very subjective. And cut to the newer generation, the Gen Zs, Gen Ys, whatever you call them, the people, I mean, who are coming and just digital, and obviously it's a lot of, I personally feel कि बहुत कम है नया टैलेंट जो मतलब डिटेल में, इन डेप्थ में एक परसेवरेंस का काम करता है, बट आजकल do you think that these digital tools, these softwares have softened the whole process, और लोगों को बहुत मतलब एंट्री जो बैरियर है वो इजी हो गया है कंपेयर टू जो 15 साल पहले था? यस इजी हो गया है, बट एट द सेम टाइम इट हैव बिकम डिफिकल्ट आल्सो। सो इजी इन द सेंस कि द एक्सेस इज इजी, तुरंत इंस्टाग्राम पे डाला आपके पास 10 पे लाइक आ गए, दैट मीन्स कि ये हो गया, सो दैट थिंग आई वुड से कि इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प, it's not going to help। अगर if you want to, you know, it's very slow process, ये बहुत ही धीमा प्रोसेस है, धीमी आंच में पकने वाली चीजें हैं। अगर इफ दे विल अलाउ सम टाइम, डेफिनेटली ओवर पीरियड टाइम दे विल डेवलप देयर स्किल, बट जल्दी में वो थोड़ा सा मुश्किल है, ये है। एंड इवन दो इफ दे कैन गो इनटू दैट, वो ना उसमें डेप्थ नहीं आएगी,
वो जो गहराई होती है, जो डेप्थ यू कैन से, वो दैट डजंट रिफ्लेक्ट. Right. इट डजंट मीन कि सारे ऐसे, कुछ लोग दे आर एक्सट्रीमली Yeah. गुड, दे आर गुड, मतलब बट वो जो परसेंटेज आई वुड से कि कम है. या Right. Right. Obviously, because I see it कि वो जो the way they want every result to be Yeah. very quick and not Just having that enough now patience. the people, they are getting inspiration from Pinterest, Instagram, whatever it's Yeah. there. Imagine these two things are not there. Not It doesn't mean ki Yeah. why we see this legendary photographer and we enjoy, and still it's relevant, still it's fresh. Why? Because it has a certain thought process, it has certain basics, certain beauty are there. Now it's सब कुछ जल्दी जल्दी, everything is very glossy, everything is very, but it's मतलब हार्डली विल से नाउ ए डे कि समथिंग अमेजिंग थिंग्स आर कमिंग. सब लोग चले जा रहे हैं, इंक्लूडिंग मी, मतलब आई एम नॉट, ये आई एम सेइंग चले जा रहे हैं, बट कहाँ जाना नहीं पता है. सो राइट नाउ वी आर इन वेरी कंफ्यूज स्टेट. So, do you think as a commercial photographer, because I know I have seen personally as a producer, I have seen lot of influx of work. Yeah. पिछले 3 साल में काम बहुत बढ़ गया. Yeah. COVID played a big role Yeah, because all the players who were in retail, Yeah. be it the designers or manufacturers or resellers, sorry, whose market used to work on a distribution model or ऐसे होता था. Yeah. वो सब डिजिटल आ गए. Correct. डिजिटल फर्स्ट D2C में आ गए. ब्रांड्स बहुत सारे ब्रांड्स का मैंने खुद देखा कि मतलब स्टोर्स बंद करके Correct. डिजिटल फर्स्ट पे जाके Yeah. बेचा, और उस पे बहुत, बिकॉज ऑफ Yeah. दैट वी हैड एम्पल नंबर ऑफ वर्क. वी हैव सीन कि टाइम नहीं मिलता है. Yeah. बट डू यू थिंक एज एन फोटोग्राफर इट्स there should be an exercise where you take some days off in a particular quarter or in a particular month and do some personal shoot Yes, for yourself? of course, I believe in. Yeah. I believe in, and definitely because you have to recharge, refuel yourself. From where you will get? If I get some off, I go to my hometown. That's where I get refuel. And वहाँ पे I go through, I go to my farm, go to my place, go to my garden or something, and there I get let's say refuel basically. So ये जरूरी है, otherwise commercial work करते करते you get very exhausted. True. Yeah, so that plus that the personal thing, personal shoot, I was saying, you were saying, that is very much required. That's where you will upgrade yourself. That's where you will because this is not just a job. This is very creative thing. If that passion, the kind of enthusiasm, अगर वो lose हो गया, then it's gone. That thing has to be there. वो no, how can I explain? That has to be there. That nuances has to be there. That enthusiasm has to be there. That otherwise, I have certain skill, I am going there, I am getting good money. That's normal job. वो करना था तो मैं बैंक का नौकरी कर लेता. मतलब I am not disrespecting, but मतलब वो कर लेता. Right. So we came here to create something, to enjoy that process. So the challenge is, and every photographer, I would say, it's challenge, or it's, I mean, everybody is understanding also कि, and I feel they are trying to balance कि अच्छा इसमें I will go there, I will shoot जो भी है, but another shoot में I can enjoy, I can put more of the effort, more of the artistic जो expertise, I can put it and I can make it in my own way. So you have to balance. अगर कुछ नहीं है, let's say 2 महीने तक कुछ काम नहीं, just go there, just explore. And lot of people, they are now slowly film thing is coming in and people are exploring, so that's good, doing personal stuff. Yeah, that's where we reshape yourself, refuel yourself, just gain that kind of, again, enthusiasm for this beautiful craft. Right. Yeah. One thing particularly when I see all these international brands Yeah. and international, obviously, what I personally felt is Yeah. for any international brand, a creative director runs Yeah. the show. And for an Indian brand, it's never the creative director who Yeah. runs the show. Yeah. It's always the chief marketing Yeah. officer or Yeah. CEO Yeah. who's Yeah. running the Yeah. show. Yeah. And whenever these people come to India, and I personally feel कि at times they do better justice than us, because True, when they true. shoot, True. अगर उन्होंने बनारस का घाट पकड़ लिया, They will see completely different light. right? Yeah. So I just wanted to know कि we try to copy the Western style, कि हमने Pinterest से उठाया, ये reference किया, यार हमें ऐसी property चाहिए, all that. और जो हमारे पास है, we are rich in culture. Yeah. We somehow miss the whole vibe of it. Yeah. Yeah. And I personally feel कि they do better job than us at times. So, I mean, on the basis of my experience, what I can say, fashion right now, it's a most unorganized sector, जहाँ पे कोई organization, एक structure नहीं है, जहाँ पे you are following that structure.
यहाँ पे जिससे काम चल रहा है वो कर रहे हैं. सो थोड़ा सा आई वुड से कि वहाँ पे एक स्ट्रक्चर होना ज़रूरी है. प्लस एज फार एज दैट थिंग रिक्वायर्ड दैट you told me for the how can it can be better. Yes, the people they are coming from outside, they are seeing our culture in completely different way, different light. And they since after digital thing, after Instagram or whatever, now the thing is the lot of things has came out in the sense ki requirement बढ़ गई है, but they are hardly care about the quality. I remember in 2000, like when I have started assisting, that time there was a craze of magazine shoot. There was craze of magazine shoot and people used to enjoy. Yes, of course they were doing commercial thing as well parallelly, but the people used to enjoy and they used to put so much effort. Now the magazine's dying and it's not, It's all everybody like digital yeah, copies these now days. it's getting lookbook shoot kind of. It's more of Instagram thing. Yeah, so for in magazine that people. editorial shoot, it was like more for the picture. It's not about garment, it's not about makeup, it's not about location, it's not about photography. All the thing, it was for the picture, for the visual thing. That's where people used to enjoy. Now it's getting down only. But yeah, I think कभी कभी वो दिख जाता है कि अच्छा हाँ, now it's there, but the quantity has came down. The good picture, good visual Quality. thing. Yeah. Yeah. True. Because as a person, when I also see 8-10 साल पहले when you used to Plus, buy. sorry, I will cut here कि let's say कि even though I have never worked with international team, but I have heard from a lot of my senior, from my कि because they are very particular, they are well organized. First of all, they have the respect for each and every, and they give the space. For me, if I would be more than happy if I'm getting my space. That's the creative people they want. आप पैसे थोड़े कम कर दो, दैट्स ओके, दैट विल वर्क, बट समबडी इज कमिंग इनटू योर स्पेस, देन यू फील लाइक अच्छा, then you never enjoy. So everybody has their own space. It's very well organized. Let's say stylists, they have their own job, and how and वो together मिल करके सब मिल करके they are creating beautiful thing. यहाँ पे everybody has their own say, right? They will say कि अच्छा, everybody will say their own way. So then photography will be nothing more than just a Because as technical a person. producer, I can say, even I feel sorry because I'm the same gang. 10 लोग चढ़ के आ जाते हैं फोटोग्राफर पे कि यार ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, Yeah. तो वो आई पर्सनली फील कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्लैरिटी भी नहीं होती है, Correct. एक्सपेरिमेंट होता है. Yeah. एंड see, as a producer, I also feel bad because I'm very self-aware guy in that Yeah. sort where I'm like, example, let's say I'm shooting with Raju, like I know कि यार Raju is doing everything right, and there are certain people, elements who don't know what they want. Yeah. See, problem is industry, मतलब जब most of the time जब हम face करते हैं कि they know they don't want this, Yeah. fine, but what they want they're also not clear of that. True. They're not clear. क्या चाहिए वो नहीं पता है. यार ये अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है, आप बताओ क्या If चाहिए. you're not clear, let's say if you're not clear, sometimes I have seen the people, they are very honest. They will say, Raju, मुझे नहीं पता है, आप you are the or maybe let's say stylist. Right. You have certain experience, and I have came to you, just suggest me. But the thing is कि इस चीज में ये बड़प्पन है बेसिकली कि आप सामने वालों को बोलो कि आप बताओ, आप सजेस्ट करो, बट दे फील कि इफ आई विल से दिस थिंग देन दे विल रियलाइज करे इससे कुछ नहीं आ रही है, देन सो दे पुट इट इन सम अदर वे, दे विल प्रिटेंड कि दे नो लॉट ऑफ थिंग्स, बट इवेंचुअली सो उसमें किसका लॉस है? सो इवेंचुअली द पीपल दे हैव हायर्ड यू, दे आर नॉट गेटिंग व्हाट दे आर ट्राइंग टू गेट इट फ्रॉम यू. सो उनको वो तो मिल गया जो उनको चाहिए था, बट व्हाट यू वुड हैव ऑफर्ड देम एज ए इंडिविजुअल वो मिस हो गया. सो इवेंचुअली लॉस तो हो गया ना वहां पे. सो इन दैट वे once they, I feel कि if the creative people they get a space and they get the positive vibe, good vibe, they will give you more than what you're expecting. Yeah, true. We have seen it. Yeah. People will give you, and you will, and that's the best way of working, I feel. And you enjoy the whole process of it on the floor. Because बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि कि गए शूट पे और कुछ मैजिक होगा. मतलब अगर आपने क्लैरिटी के साथ आप काम करोगे और एक वो जो आपने बात बताई कि सेल्फ अवेयरनेस का बात बोलोगे कि यार let's say I'm a client, I'll say Raju,
I don't know what to do with it. Yeah. This is my collection. This is my these Yeah. are my ensembles. You do whatever you think Yeah. you can justify Yeah, to that. yeah. तो वो एक leap of faith होता है. Correct, वो एक correct. trust factor है Yeah. कि हाँ यार, And let then him you do will the put justice. more effort. Yeah. No, this person. क्या is मेरी so- responsibility Yeah, as a and now you photographer, I need give to do the more best. effort, and I have seen in that situation the result comes always fantastic. And I believe that is the best way of working. Right. Yes, of course, you give the direction कि आप ये आपके इस zone में चलना. इस जोन में डोंट गो ज्यादा वो, बट इसमें जो रहते हो जो कर सकते हो, आई हैव ट्रस्ट ऑन यू and go for that, and people will do magic. The magical work will come out. Yeah. Talking about the fellow photographers, same age group के, whom do you admire? I mean, see, admire तो आप सबको करते हो, just for everybody. Like he admires everybody, but like if we talk about the current generation of photographers of your age who are actually running the show in the fashion, lifestyle, advertising space, we know as a matter of fact that you guys gonna run the show. Yeah. 5-10 years down the line, you will be the ones who will be on the top and running this show. But when you see the fellow photographers of our space, सब एक दूसरे के दोस्त हैं यार, we chill casually, we talk on a lot of factors and all that. Tell me more about it. Like, how do you see it? Do you see it as a competition or do you see it as No. हाँ, competition. See, as an individual, अगर मैं ये बोलूँ ना कि अगर there are two way of seeing. Firstly है कि you see your person, whoever they are, and you see their work and you enjoy it and you admire it and you get inspiration from there. There's one way of seeing. Another wing, अरे यार, let's say jealous. अगर ऐसे बोलो कि मुझे jealous नहीं हो तो गलत बात होगी कि because otherwise it's just a human tendency. So basically I'm not getting jealous. It's about like आपको लगता है यार ऐसा मुझे भी कुछ करना चाहिए. वो भूख है. Yeah. That curiosity is there. Rather than क्या shit ये भी उसको मिल गया. So right. That's not. So that's the right approach. कि यार जब किसी काम देखते हो यार shit मैं भी कर सकता था, मैंने क्यों नहीं किया? Yeah. So that's a positive approach. Yeah. You see, yes, of course, a lot of people they are doing really good work. You see, and I तो always message में कि कुछ अगर मुझे लगता है always यार this is really nice, मतलब काफी मजा आएगा देख कर. And I also try कि यार हमें भी कुछ करना चाहिए. Let's try something. Let's try something. And you get inspired, and that's how you grow. Plus, first of all, what I believe in कि we should not compare individual to individual. Right. Everybody is in their own way of journey. हमारी अपनी जर्नी है, उनकी अपनी जर्नी है, उनकी अपनी जर्नी है, and we should respect each other journey. और उसमें उस जर्नी में उनकी अपनी लाइफ की प्रेफरेंसेस हो सकती है, मेरे लाइफ के अलग प्रेफरेंसेस हो सकते हैं, उनके लाइफ की अपनी प्रायोरिटी हो सकते हैं. तो एवरीबॉडी हैज देयर ओन वे ऑफ देयर ओन प्रायोरिटी, देयर ओन व्हाट इट कॉल वे ऑफ सीइंग द थिंग्स. देयर इज नथिंग राइट एंड रॉन्ग, बट इंडिविजुअल यू कैन, since everything is on your phone only, yes, of course you see, enjoy, you motivate and just try to become better version of yourself rather than कि just वहाँ से वो चीज़ कर ले. So आप उसका मतलब I would say कि just get inspired, just do more of the, that's how I see. As far as I तो because it's not like one directional. Like some people is good in certain things, some people are good in certain things, some people are great in certain things. कोई सही गलत कुछ ऐसा नहीं है, सबका अपना अपना एक जोन है, बढ़िया है, they are doing good. Personally, I enjoy a lot of fellow photographers, and I always admire, I always text him. Ranvijay Paul, he's one of my favorite photographers. Nishant Radhakrishnan. Nishant and you assisted, I was together. So he has completely, and he has स्टार्टिंग से उसकी अपनी एक वो थी दैट आई कैन सी, मे बी लोग को अब दिख रहा है, बट आई हैव सीन कि ही हैज कंसिस्टेंट इन दैट वे, ही इज अमेजिंग इन दैट वे. आई एंजॉय प्रणय सरकार का वर्क, ही इज अमेजिंग. he go through certain process which is amazing, which is very idealistic, I would say. Amazing. He go through the he reads the book, he do the sketching. He's amazing art director. So these few photographers, they are one. No, I have seen the process of his shoots, and I can say कि हाँ, it's a lot of effort being put. Like for every shoot, like because I met one of his. There's this producer who shoots a lot of his campaign. I happened to meet that guy, and he said कि Pranay sir is into that zone. He will work on every single vertical and try to make the shoot very different, very interesting, and like breaking those barriers. Correct. Which is very good. Yeah, and good part is कि like whenever, like now he become very good friend of mine. So whenever I will go for them and just ask something, he will never hesitate to help me. So that I feel कि no matter आप good photographer जो भी हो, अच्छा बुरा जो भी, everybody is doing good only. But if there should be good respect for each other. Right. Like you are also helping me,
I will also help you. I will also criticize your work. You will also criticize my work. So that's how together we are working. That's how we are growing each other. We're helping each other to grow. So rather than just getting jealous, rather than be supportive to each other, then that's how we will grow. Rather than we are seeing in some other way. And I'm very lucky कि now we are very close friend. Whenever I ask for anything, he always come to my home. He has huge library and he always सब कुछ है, आप देख लो क्या करना है. So I just wanted to know, like, what do you look in an assistant? Like, if somebody is approaching Raju, and as a photographer, as a person, as an artist, what would you look in a particular person? I'm sure कि आपके पास हजारों सैकड़ों मेल आते हैं, hundreds of emails have been coming. But I look for the person who is थोड़ा slow in the sense कि they are not in hurry. ठहराव है जिंदगी. हाँ, वो हरी नहीं. और more than work ना, I see their वो मतलब how he is going to be there. काम बहुत लोग अच्छा हो सकता है, बट इट्स नॉट अबाउट कि मतलब यस ब्रो वो मुझे नहीं पसंद आती है. वो यू हैव टू बी लाइक दे आर रेडी टू गिव सम टाइम, दे आर रेडी टू गो स्लोली रादर देन कि आया तुरंत ही. ऐसा नहीं होता है. इवन दो डजंट मैटर यू आर सो मच टैलेंटेड. So I always look for the people, they have the enthusiasm, obviously that should be there, that's why you are coming. Plus they want to spend some time, they're not in rush, and they have that kind of integrity, they have that kind of कि भाई they want to spend some time. Right. Obviously hard working ये सब तो होना चाहिए, जो कि डिमांड है, that's a genuine demand. They have and they know कि मतलब मेरा few people कि बस वो चले जा रहे हैं. अच्छा ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, कहीं मिल गया, चले गया. So it should not be there. I feel like they should be what it called, they should be very clear. Right. If they are approaching me, that means कि he's or anybody else, तो उन्हें पता है कि मैं इन बंदे को इसलिए अप्रोच कर रहा हूँ because they want to take something from him. Yeah. So थोड़ा सा I तो always look for कि थोड़ा ठहराव हो बंदे में, rather than कि जस्ट आप आए गए एकदम ये वो, अदरवाइज देन कोई मजा नहीं है. No, I have heard stories from other photographers as well, कि where the people are trying to pitch in and say कि सर आपसे लाइटिंग सीखनी है. हाँ. बाकी हम खुद कर लेंगे. इवेंचुअली वो तो सीखोगे. लेट्स से इफ आई विल से माय जर्नी और व्हाट आई हैव लर्न, लाइटिंग तो वो है, वो तो आप इवेंचुअली सीखो. बट मोर देन दैट व्हाट यू विल लर्न, दैट्स कंप्लीटली इट्स अप टू यू. मतलब आई हैव लर्न लॉट ऑफ थिंग्स अपार्ट फ्रॉम जस्ट लाइटिंग. आई लर्न लॉट ऑफ from him for the life, how you have to very balance, how you have to deal with the models, how you have to deal with the very without losing your patience. Lot of things you can learn. And वो जाने अनजाने में बोल देते थे और आपके ऊपर कैसे चीज़ों को पिक करते हो. सो लाइटिंग सीखना, फोटोग्राफी में लाइटिंग इज़ वेरी ओवर रेटेड. सो वो ना आप सीख जाओ, कोई बड़ी बात नहीं है, बट किस सिचुएशन में कितना क्या यूज़ करनी है, कैसे करनी है, बहुत सारा चीज़ जो है, तो वो दैट कम्स विद द टाइम. सो द पीपल वाई इफ यूल सी द पहले के लोग दे यूज टू गिव 6 years 7 years 10 years एंड वंस दे आर कमिंग आउट दे वर फैब. साल 2 साल में कुछ नहीं मिलता है. सो थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा. One more thing, I want to know that how do you start as a day? I mean, how do you start your day when the assignment is there? Just say, for a photographer, for any artist, like a... It's not very ideal though. It's like a shoot day and a non-shoot day. So when it's a shoot day, how do you prepare yourself as a photographer before you go to the set? Yes, there's a shoot day, then obviously there are a lot of productions are there. But most of the time what happens कि that keep revolving your head. लेट्स से कुछ चीज़ है, जैसे कि आपके पास कोई ब्रीफ आया, सो दैट ब्रीफ दैट हिट्स यू है, आपके दिमाग में रहता है एंड दैट कीप रिवॉल्विंग. अच्छा इसको कैसे करना है वो बताना मुश्किल है, बट दैट इवन दो समटाइम इन नाइट ऑल्सो दैट समटाइम वो आपके उसमें ड्रीम में भी आता है. अच्छा ये इसको कैसे करूँ, इसको कहाँ करूँ, कैसे करूँ, किस तरीके से. तो लॉट ऑफ थिंग्स इट विल कीप कमिंग एंड उस दिन जल्दी भी उठ जाते हो आप. मतलब एटलीस्ट मेरे लिए तो वो यू डोंट नीड अलार्म क्लॉक. हाँ मतलब अगर मुझे लेट से आई हैव टू वेक अप एट 5 o'clock तो वो 3:34 के आसपास वो एकदम बिकॉज बेचैनी रहती है. अच्छा मुझे ना अच्छा ये कैसे होगा. समटाइम एंड आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, समटाइम व्हाट हैपेंस समथिंग इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड. वो मैंने देखा है कि वो कभी कभी मैंने देख लिया है दैट वो सपने में भी वो चीज़, क्योंकि
ओवरनाइट आपके दिमाग में चल रही है, डे नाइट आपके दिमाग में वही चल रही है, और कभी कभी वो क्रैक हो जाती है, बिकॉज डे नाइट आपके दिमाग में वही चीज चल रही है. सो दैट और किसी से बात भी कर रहे हो, फिर भी आप बात तो कर रहे हो, बट दिमाग में आपका वही चल रहा Mentally है. you're there. हाँ कि अच्छा यहाँ से ये करनी अच्छा ये. सो या No, that is very interesting because when I started producing content, so I would wake up without the alarm clock. आजकल मैं बहुत lazy हो गया हूँ. आजकल तो मैं पहले shot के time पे पहुंचता हूँ because that's a trust. That's also a leap of faith. I trust my team that they will do better. और वो phases में आता है. Whosoever is joining recently and then they get trained and you know exactly how we work. There's a proper setup team, proper POCs for every single thing related to a project and we go like that. But earlier I used to be like that. Here I could not sleep. और नींद नहीं आती थी रात को यार कि अब ये कल होगा कैसे होगा. बट एज अ फोटोग्राफर लाइक सो देयर इज अ मूड बोर्ड यू नो कि ये शूट होना है. डू यू प्रिपेयर योरसेल्फ मेंटली कि हाँ मुझे तो लाइटिंग यही करनी है, और यू कीप इट ओपन कि सेट पे जाके विल सी कि हाउ वी कैन मेक इट. आफ्टर गेटिंग द मूड बोर्ड ऑब्वियसली आपके दिमाग में हो जाती है सेट कि अच्छा ये करनी है, वो चीज है. प्लस यू कीप some space for the exploration also. You keep some space for improvisation कि आपने ये बेसिक चीज तो आपको पता है कि this is the direction, obviously I will go in this direction, these are the basic thing, but once I reach there in terms of let's say you are shooting outdoor, indoor, whatever, so वहाँ पे according to the garment, according to the model movement, so there are a lot of things you improvise कि अच्छा उसमें उस situation में क्या मिल रहा है that you want to catch it. So both the things you keep the thing कि something fixed and something explore there also. Yeah, Right. both things are there. Right. And obviously, it's whenever we do any assignment, it's always a team job. Every single team player does play the respective role. Talking about as a photographer, when you see a particular brief, I mean, how does the suggestion work? You know, these are the kind of models or these are the kind of faces or protagonists which we think are the right fit for this kind of campaign or this kind of work to be produced. Do you think that in today's scenario, when we work with brands, particularly with the commercial, I'm talking about the commercial work because designers, I know it personally, they do give that kind of freedom to some extent. For the commercial jobs, do you think that the kind of freedom is there where a photographer has a say, you know, let's not go with this phase which you are suggesting or which you have finalized, but let's go rather with this phase because we think that this is the right way. What kind of discussions happen usually with the brands? Yes, there should be some suggestion from a photographer as well, because yes, of course, the marketing people, the other team, they are seeing the picture, they're seeing the model in certain way, or seeing the talent in certain way, but where, because we see the talent in different way. Once you close the eyes in viewfinder, आप cut off हो जाते हैं दुनिया से, and you see the heart of that person, soul of that person. So obviously all the time I would say कि अगर if you have logged the photographer, you will have logged the stylist, always try to get some input from their initial the people used to take कि आप ही suggest करो. अभी थोड़ा सा मुश्किल है कि now you people ask कि are you free on this date? Yes, I am free. ये है करना है, तो now it's do yes or no. Then you अच्छा who is the cast? No, ये तो पहले से लॉक कर लिया, सो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज वॉज एज ए फोटोग्राफर दिस इज वेरी हाई पॉइंट. अगर आपको शूट अच्छा करवाना है, उसका एक तरीका है, आप फोटोग्राफर को हाई दे दो, whether it's a garment, whether it's a model, whether it's a subject, whether it's a location. If the people they're creating something, they are not in high, then there's no point. वो तो जाएगी, but the thing is the kind of something exceptionally good picture if you're looking for, वो नहीं आ पाती है. That's true. Plus, I mean, the market has changed drastically. Touchwood in the last 2-3 years specifically, we're getting back to the Indian faces, the editorial faces, the characters and all. Otherwise, if you look 5-7 years back, एक period आया कि जहाँ पे हमें सिर्फ we need foreign models, we need foreign faces and all that. Now it's getting back, and we are able to produce or create different set of imagery. So obviously it has changed. That's a very good thing. But I mean, when you talk about different genres of work, चाहे वो editorial है या commercial है या lookbook है and all that, like in different genres. I personally say as a producer right now, it's very difficult for me to understand these days, in most of the times, whether the client wants a lookbook treatment or a catalog treatment or a campaign treatment. So what? Same thing I told you, right now the whole fashion scenario is going through very state of confusion. Whether it's me, whether it's a production, whether it's the stylist, whether it's because
ये किसी का दोष भी नहीं है, इट्स नॉट वन पर्सन फॉल्ट, इट्स द सिचुएशन ऐसी है ना, वहां पे इवन दो डिजाइनर, इवन दो ब्रांड एल्डर्स, दे वांट लॉट ऑफ कंटेंट, तो उनको भी क्लैरिटी नहीं क्या चाहिए, सो वी आर इन एज ए होलसम, वी आर इन वेरी कंफ्यूज स्टेट ऑफ स्पेस, वो है। Yes, but in between, some people are there very smart. They what they do. Obviously, you have to keep changing. जो 10 year, 12 year, 15 year back हो रहा था, now you can't do because obviously the time has changed. Everything has got changed. So you have to cope up with that. But उसमें if there is a clarity, then it's always better. Let's say you are saying कि क्या है look book करनी क्या है. So maximum people they are not very much aware कि look what the look book, what their uses, what the campaign, what the so सब कुछ मिक्स हो रखा है। अच्छा ये मुझे ये दे दो, इसमें थोड़ा मूड शॉट भी दे दो, for them it's a campaign. So वही है, I mean and some people are very very clear कि no I want this thing and after 5 shots का 5 picture का मुझे I want to explore something, वहाँ पे you can give me the mood shots. So it's balance. And when we see from the market angle, obviously you have assisted the greatest of the greatest amazing photographers in the space, had an opportunity. Yeah. Nobody is lucky like Yeah. that, being Yeah. honest. Yeah. Right? It's very few people. Yeah. The success rate, I would say, to assist Tarun sir or Tarun Vishwa sir is like, I think, less than 1% and less than 0.1% will be lucky to get that. And they have a style of working, Yeah. right? These are the number of shots. This is how you're gonna do it. Yeah. And this is how the whole day plan Yeah. is like. Yeah. And now we look at our time. Yeah. जहाँ पे हम भी फंस जाते हैं. We are Yeah. also young. Yeah. As a producer, we say that yeah, client is saying yeah, we have to do Yeah. 50 shots, 40 shots, and volume is changing. Yeah. और पहले जब होता था कि when a piece of content Yeah. when was produced, developed, created, Yeah. and that it had a huge breathing space. Correct. फैशन की बात करें तो स्प्रिंग समर और ऑटम विंटर 2 सीजन Yeah. होते थे और दैट ब्रीदिंग स्पेस विल बी अक्रॉस द स्टोर्स फॉर 6 months Yeah. जब तक अगला सीजन नहीं आएगा एंड नाउ इफ यू लुक एट अ ब्रीदिंग स्पेस एवरी 48-60 hours Yeah. your social media is changing, Correct. your web banner is changing. So as an artist, how do you see it? Like I mean in a way पहले एक इमेज दिखते थे and we would always remember कि अरे sir shot that, right? And now I see Raju's work at 1 o'clock, 1:30 I see somebody else's work, 2 o'clock I see somebody else's work. It's changing. So I personally feel कि as a photographer you also have a lot of responsibilities कि यार वो जो 5 सेकंड या 3 सेकंड का ब्रीदिंग स्पेस आपको इंस्टा रील पे या इंस्टा फीड पे किसी के स्क्रीन पे मिल रहा है, आपको प्रूव करना है फॉर क्लाइंट्स एज वेल. लाइक क्लाइंट भी आजकल 50 लोगों का काम देख रहा है. सो हाउ डू यू टेक इट, लाइक हाउ डू यू विजुअलाइज इट? सो एज ए क्रिएटिव पर्सन आई कांट गो इन दैट वे कि अच्छा मुझे ये 5 सेकंड मिल, बिकॉज वी आर नॉट ए मार्केटिंग पर्सन, वी आर नॉट ए लाइक सोशल मीडिया हैंडलर, व्हाटएवर इट्स देयर, वी आर ए क्रिएटिव पर्सन. मेरा एक जॉब है, मेरा एक जो धर्म कह लो, जो भी आपको मिला है, जो भी स्पेस मिला है, जो भी ब्रीफ मिला है, यू हैव टू डिलीवर बेस्ट ऑफ द ये जो भी गिवन स्पेस में, जितनी भी स्पेस मिली, जितनी भी आपको ब्रीदिंग स्पेस मिली, उसमें यू हैव टू डिलीवर जितनी भी बेस्ट हो सकती है. ऑब्वियसली इफ यू आस्क टू मच गारमेंट तो ऑब्वियसली दैट क्वालिटी वोंट कम. इफ यू गिव सम स्पेस, लेट्स से थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई कि ऑल द क्रिएटिव पीपल दे ओनली थिंग दे डिमांड गिव द स्पेस. अगर आपको स्पेस दे दिया, डेफिनेटली दे विल वर्क, दे विल गिव अमेजिंग रिजल्ट. वो मिल गया है, सो आई विल बी मोर देन हैप्पी वंस द यू हैव डिलीवर्ड बेस्ट. ऑब्वियसली द रिस्पॉन्स विल बी गुड. अब टू मच क्वांटिटी के चक्कर में ऑब्वियसली you are not valuing that quality, then obviously that will show there also, right? If you browse through lot of people, let's say designer या फिर किसी का ही मान लो आप, you will just erase the name, everything will look same only. Yeah. There's nothing new. We discussed that a lot. Yeah, it's क्योंकि what I believe कि every designer they have there's some brand imagery is there, brand image there, so they're not in, वो से स्टिक करना बहुत मुश्किल है. Yes, of course you evolve, but उसको छोड़ करके you are trying something else जो कि it's not you, then ये मुश्किल हो जाती है. Then you can't see, firstly अगर even नाम भी नहीं है, then you will see अच्छा he is the designer, you can say. अगर नाम नहीं भी है then you can easily figure it out, but now अभी तो मुश्किल है. Because it's too much of work coming in. So right now the thing is कि क्वांटिटी बहुत आ गई है, इट्स बाढ़ है, बट क्वालिटी जो डेप्थ हो सकती है दैट हैज मिस्ड आउट इन एवरी रेस्पेक्ट. आई वुड से वेदर इट्स गारमेंट, वेदर इट्स स्टाइलिंग, वेदर फोटोग्राफी, एवरीथिंग. सो दैट सैड पार्ट, बट सब सैड थिंग ही नहीं हो रही इस बीच में, पीपल आर क्रिएटिंग गुड थिंग ऑल्सो. सो इट्स अप टू इंडिविजुअल कि कैसे उसको बैलेंस कर रहे हैं.
बिकॉज ऑल द टाइम इट्स नॉट लाइक कि पहले सारे अच्छे ही होते थे, ऐसा भी नहीं है, उस समय भी शिटी वर्क होते थे, बट उसमें वो था कि क्वांटिटी कम थी, अब उसके ज्यादा हो गए, बट नाउ इट्स इंडिविजुअल के हाउ दे आर बैलेंसिंग, इधर यू कैन डू द पर्सनल वर्क, इधर यू कैन डू लाइक जो what you're enjoying, so that balancing is the key. If you were to change something in the industry, what would you change in Delhi market? I'm specifically talking because you always compare, being a producer, we always compare Delhi versus Mumbai market. Mumbai is Professionalism, I would say. Professionalism. Delhi needs more of it. Delhi need more professionalism, more respect for the team, because you are not hiring some labor, you are hiring a team. क्योंकि हम कभी-कभी लगता है they own us. Yeah. They're not hiring our services, they own us. Some basic etiquettes are there. If you are asking somebody, you are hiring somebody, you are inviting somebody, basic things are there. Feed well, respect well. उसकी छोटी छोटी चीज का वो रखना. You are only concerned about the final result, but you are not concerned about the people there. They have came for you. The one because all people they have came for you only. Yeah. Yes, of course, it's their job also. But सबको आपने invite किए थे, it's your duty कि आप उसको थोड़ा सा just treat them respectfully. Right. So ऐसा नहीं कि सब ऐसा है, but few people are there very good. So once you have given enough respect, obviously they will work really hard for you, and that will return. Right. So थोड़ा सा I would say, थोड़ा professionalism plus the kind of payment का things are there. It's very sad. It will come after changing so much. Then and I personally feel that you feel bad after one or two times that approaching. It's not getting respected. Then. Yeah. I personally feel that. I agree on that part. जब तक project कराना है, there is one POC who is getting everything done for you. The moment project is done, for the payment, there are like bloody 10 POCs, 5 different levels, and then you bloody. Then their priority gets changes. Yeah. You are done and done. Then move on. Yeah. Right. So जितना respect आपकी government के लिए है, you are saying yourself artist, no? तो respect other person also. So that's the mutual. Otherwise just कि no I am, जब तक आपका काम है, you are after their life, but once it's done, then you are not caring, then it's not good thing. Right. So next time they will be very careful. Right. So and that will eventually reflect that will hamper your product. वो आपको direct तुरंत नहीं दिखेगा, but वो indirectly it will affect your thing only. आपकी productivity में असर करेगा. Great. If you have to build a niche in future, Raju wants to build a niche. What kind of genre, what kind of art form you would love working with? दिन हो रात हो, you'd be like, यार ये तो करना है मेरे को. यार niche कैसे वो it's not in my hand. वो niche होता है नहीं होता है, it's hand of audience. वो आप सामने वाले किसी आर्टिस्ट के हाथ में नहीं होता, उसके हाथ में बस यही होता है कि whatever you enjoying, just do well. Right. And once you will do well, definitely people will connect with that, and for them it's niche, right? So as individual, it's apply for everyone basically कि जो भी आपको मजा आ रहा है, चाहे जो भी हो, let's say if I'm enjoying landscape, I have to go, और मजा भी आता है, then you will keep doing and you will reach that level. If I'm enjoying very fine art, if I'm enjoying very documentary, I have to keep doing whatever I'm enjoying. Basically, yeah. I came here for the sheer passion कि मुझे ये मैं enjoy करता हूँ. अगर whatever you are enjoying, obviously you will deliver best. Obviously the result will come out very good only. And over period of time, it will start looking good. So for niche, तो I won't say कैसा niche होगा, but for other people, obviously that will reflect the quality. And once the quality is good, obviously people will see and they will appreciate. Right. Yeah. So जो भी genre, जो भी enjoy कर रहा है, they should go for that. The passion has to be there. Perseverance has to be there. Yeah. Because I personally find कि if you are in this industry and you are doing the job for the sake of doing it, don't do it. Yeah. Because you will lose yourself completely after a certain time. You won't be the real you. Yeah. So since same thing, what I told ki we are in very commercial art form. Yes, of course you have to deliver sometime on the basis of given brief or whatever. But at the same time, आपका जो अपना individual thing है, that also have to be protected by yourself, मतलब by myself. मैं कितना मुझे पता नहीं, but I'm aware of that कि I have to keep that thing protected. चाहे जो भी कर रहे हो, चाहे आप किसी चीज से करें, जो भी आर्ट फॉर्म है, so that has to be protected and it has to be good balance. Yes, of course, I'm getting counted, I'm a so-called artist, but I don't have money. I also don't want that. ये कि मुझे नहीं चाहिए कि भाई I also want money, obviously. But at the same time, I don't want कि I have only money, but I don't have anything. If I'm looking back, कुछ भी नहीं है, तो I don't want
तो थोड़ी बड़ी बात हो गई, बट आई एम अवेयर ऑफ दैट. Right. या It completely makes sense. I Yeah. mean, I can correlate with almost everything you shared, Yeah, like yeah. the way you started the journey, how you particularly picked up this Yeah. profession as photographer, because I know. Because sometimes what else, once you are coming with you where you have got good payment, but after coming home, ठीक है, it's done. But sometimes you feel कि once you have shot really well something which is very you have enjoyed, You feel like a young kid. yeah, and you want to see. आप घर पे जाते, even though you are tired, but you will go home, you will see कैसे क्या है, Yeah. and you are too much into that, and that will stay in your mind for a longer period of time, Yeah. and you enjoy it, even though that project has paid very less. That's okay, but you really enjoyed that thing. So both the things are there. No, I personally Yeah. know it from my resources as well, that you enjoy your own personal concept shoots. You love the process of it. Yeah. That's great. That's great. So yeah, I mean, we should conclude this interview. We will. What I'm planning is once Ranvijay is back, Yeah. we'll do a trio interview. Yeah. उसके पास time नहीं है. He is busy. No, you will have to. We'll have to. So no, I told him. I said, let's go one-on-one. But so I discussed this thing with him. Like they said today, and he had to fly 5 days down the line. 5 दिन के बाद he's like, मेरा 5 दिन shoot है. मैं एयरपोर्ट से ही मतलब शूट से एयरपोर्ट जा रहा हूँ. But we'll do one more interview. Would love it will to be great fun. Because he's also fun too. Yeah. He's fun. Yeah. He's And even though I believe his journey is also very amazing, very something to learn. Yeah. So since personally I have met once and we see, so and that reflects in your work. Yeah. So जो आप हो आपके काम में दिख जाएगा. सिंपल सी बात है. अगर आपके अंदर कुछ नहीं है तो आपके काम में भी कुछ नहीं दिखेगा. सिंपल सी बात है. So, I mean, at the end, if I look at the gist of what you just said, that photography is a medium, keep it separate, but it's more about exploring yourself. Yeah. If you're true to yourself by doing whatever you're doing every single day, by exploring every single thing, whether you are traveling, whether you are at home or in streets or outdoors or indoors, I think that gets in sync with when you fix a frame or look at a visual. Yeah. Great. So that has to be there because सारा का wholesome things are you, मतलब the whole experiences, whatever your age are there, whatever I mean from where you are coming from what the experiences you had, कहाँ पे आपने पढ़ाई की, कहाँ पे आपने, तो छोटी experience that you only know, right, and that helps you in making you, and you make that picture. So picture is not just कि आपने बोला क्लिक कर दे, वो आप एक why the one picture one situation people sees from completely different way. The way I will see different, the way you are seeing, the way other people are seeing completely different. Why? Because everybody perceives different way. Yeah. तो वो फिर कैसे हो जाती है? Because everybody का अपना अपना way of thinking है. So in that way that experiences really matters. मतलब आप कैसे लोगों के साथ उठते बैठते हो, कैसे लोगों के साथ आपकी फ्रेंडशिप है, क्या कहाँ पे आप जाते हो, कैसे, मतलब lot of things are there. Which kind of relationship you had with your friends, with वो है that once you are a very peaceful mindset, obviously that peace that will reflect in your picture also. Yeah. Once you are in chaotic chaotic mind, that then you can't create a beautiful picture. Right. It's very. It's a reflection of what you are going through. Great. Thank you so much, Raju, for coming over. Thank you. Hope to see you soon. Yeah. Thank you, guys. Thank you. Bye.